so this is what is pro rata plain one. And pro rata allotment, when you had some oversubscription of the shares, and then after that you are issuing the shares. So in that case, in the second case, what happens, you have to actually see, that this thing, that how many shares were applied by the people. Sometimes the information will be given to you something like this, that the number of shares applied are let's say 500. So you will have to see that whether the applied one is given or allotted one is given. So that is the most difficult part of this whole concept. Rest of the things are pretty easy. So what I'll share with you right now is already available to you. Not already, I will be sharing with you, so you don't have to take a screenshot on all. For now, just to solve this, if you want, you can take the screenshot. Otherwise, this will be available to you later on. Okay, so let me give you this thing, the test which I am going to explain with you all. Can you see it on the screen? No? Okay. Okay, till then it is opening. Let me discuss this with you. How do we calculate? What is the journal entry and how do we do this? Okay, so there can be two cases. If a shareholder does not pay, let's say, any call money or any money on allotment. See, only one possibility is not there when you issue the shares, or at least application you will receive. Okay, all of the time this will happen. At least application will come, then only the forfeiture question comes. Otherwise, if nothing is being paid by the shareholder, then there is no question of forfeiting that share. So you will receive application. At least it is a possibility that you will receive application and allotment, and then further calls are not being received. There is a possibility that application money is received, allotment money is also received, even first call is being received, but the final call is not being received. In that case also, shares can be forfeited. Now when we talk about forfeiture of shares, what could be the possibilities of forfeiture of shares? See, one case is there, like when shares are being forfeited immediately after the call, whatever call it is not being made. For example, application money. Application definitely in all the cases will be received by you. So you received application money, right? After that, allotment money is there. Suppose allotment money is not being paid by the shareholder. Let's say the call money is also not being paid by the shareholder. First call is also not paid. Second call is also not paid. So director's discretion will be, entirely it will be the director's discretion whether they want to forfeit shares over here, or they want to wait here till here and then forfeit, or they wait for all the calls and then forfeit his shares. Okay, so this, how will we come to know that when the shares are going to be forfeited? That will be after all these are done. Okay, all this all this information is given to us. So question will always tell when the shares were forfeited. Yeah,
in some question, what may happen, the question will remain silent and it will not tell you that, when the shares were forfeited. So in that case, if all the money is given that the shares were forfeited, means nothing is written when the shares were forfeited specifically. They just give you first call amount was this much, allotment amount was this much, and second call amount was this much. In that case, what are you going to do? You are going to assume that this whole number of whole shares were, whole money was, the entire money was called up. Okay, and after that only the shares were forfeited. Okay, is that clear to all of you? Now, what else can be the case? If premium shares were issued at premium and the money hasn't come. So see, in case of normal issue where the forfeiture amount was not, where the premium amount was not there, what is the entry? Share capital account is debited, share forfeiture account is debited, and call scenarios account is debited. Now, very important thing over here is with called up amount. Okay, share capital account will be debited always with the called up amount. Why not with the other amount? Because the other amount yet not called. Suppose the share was of 10 rupees. Okay, and the company has called only 8 rupees till now. So obviously 8 rupees only will be debited to share capital account. Now this is very important to understand over here. What is share capital? Share capital is a liability in the nature. That is why share capital is always credited. Now you are forfeiting the shares. So it means you are reducing the shares. Okay, your share capital is getting reduced. So when your share capital is getting reduced, obviously you will have to debit it. So you will debit it with the same amount with what amount you had credited it in respect to those shares which you are forfeiting. Suppose you are forfeiting 100 shares. So in respect of those 100 shares, the respective amount, called up amount, is going to be debited. That is why you debited. Share forfeiture, what amount is going to come? The amount which is received. Now, very important thing over here, along with share forfeiture, never ever include the amount of premium. Let me explain you this thing, why premium is kept separately. For example, in a question, they have given you that a shareholder is being called 8 rupees per share and his share are being forfeited because of non-payment of some amount. Let's say there was application of rupees 5 and allotment money, application of rupees 3 and allotment money was rupees 5. Now this 5 was bifurcated into 3 plus 2. What is this 2? This 2 is SPR. Okay. Now let me say 9 rupees. Instead of 8, I am making it 9 rupees. 9 rupees. And 1 rupee he has paid. 1 rupees is being paid on, let's say, first call. Okay, first call money 1 rupees. It is not paid. And after first call, his shares are being forfeited. Now, after first call, when his shares are being forfeited, means 1 rupee ka final call is still left. Final call is not being called right now. Now, if I pass the entry, what entry will I pass? I will pass this entry, share capital account debit to share forfeiture account to calls in arrears. Now listen to me very carefully. Let's say this shareholder had 100 rupees, 100 shares, 100 number of shares were there. Okay, so 100 shares are being forfeited. First of all, always remember in share forfeiture account, which amount will be carried? The amount of called up share capital. What is the called up amount over here? I told you 9 rupees is the called up amount. So 9 multiplied by 100, 900 rupees I'm going to write over here. Okay. Share forfeiture. Always I told you in share forfeiture, the amount which is being received goes to the share forfeiture. Now, if you look over here, what you can see, 3 rupees are being paid up by this shareholder and this 5 rupees are also being paid. Okay. So if
loosely if I say, okay, without being, looking properly and recklessly, if I say, I will say 5 plus 3, 8 rupees are being paid by the shareholder. So I should do 100 into 8. Don't write right now. Okay, you just have to understand. If you do not write this example, this is perfectly fine. And if you're writing, do not write it, because I am going to erase it. I'm making a mistake over here just to explain. So if I do it over here like this, 100 into 8, and then I do over here 100 into 1, what will happen? This is 800 rupees share forfeiture. This much he has paid, and I will say this calls in arrears amount is 100. My entry is tallying. Okay, my entry is telling this is 900 rupees and everything is, tallying. But still, I will say this entry is wrong. Why it is wrong? Because in share forfeiture account, never ever can share premium come. Okay, share premium can never come along with share forfeiture. Reason is that you all have studied in the theory that share forfeiture, security premium reserve account is a separate account, and this account can be used, this amount which is there in this account can be used only for 5 specific uses. Apart from those 5 specific uses, it cannot be used anywhere else. Now, if we are putting it over here in share forfeiture के साथ हमने SPR का account include कर दिया और यहाँ पर लिख दिया, then what is going to happen? Later on, when you reissue these shares, you use share forfeiture, means you are going to use security premium reserves account for issuing the shares on discount, which is not allowed. Security premium reserve can be used only 5 specific uses. That is why it has to be removed from here. Still, my entry is not going to tally. If I write this is 7 rupees, okay, not 7, 2 rupees. This was 2 rupees, right? So 2 rupees if I remove, okay, then also my entry is not tallying, because this figure is also wrong. This figure is also wrong. Okay, so let us correct this entry and write and understand. This is a very, very common mistake the students make, and they think, okay, my entry is telling, so I have not made any mistake, but ultimately capital reserve account is going to come wrong only. So see, what is the mistake over here? I have to write share capital account over here. Entry was correct, but the amount was wrong. This is going to be debited with what amount? Assuming that this share was 10 rupees. Okay, I'll have to change it over here. The amount I'll have to change over here. So this is 3 plus 5, 8. And 9, my final call is not yet being called. Okay, before the final call only the shares were forfeited. The balancing figure is going to be final call. Okay, let it be 1 rupee only. What will be the balancing figure? My share was issued at rupees 12 per share. Why rupees 12 per share? 2 rupees is premium, and when nothing is returned, it is always assumed that equity share is equal to 10 rupees is equal to 10. One share is equal to 10 rupees per share. So it has become 12 rupees per share, 2 rupees premium. So if I say this 5 plus 3 is 8, 9, 10, 11, 12, 3 rupees should be final call, which is not yet being called. Okay. So out of this amount till here, what is being called, which is 5 plus 3 plus 1, means 9 rupees. 2 rupees belongs to securities premium reserve. Are you all getting this? You can answer. Are you all getting this? 100 multiplied by what amount I am going to write? How much is being called up till now? 5 plus 3, 8 plus 1, 9. Out of that 9, I am purposely writing like this. Out of that 9, how much was relating to SPR? SPR was rupees 2. So I will deduct this 2 rupees from here. So how much is left? It is left as rupees 7 per share. Okay. So I am going to multiply it with 7, and this is going to be 700 rupees. Okay. Security premium reserve is already being
paid. Okay, why it is being paid? See, he has paid this money. No, this is being paid. Rupees 5 per share is being paid. Allotment money, rupees 5 per share is being paid, and in that 2 rupees was included. What he hasn't paid? He hasn't paid this 1 rupees per share. 1 rupee per share, which is final call. Final call is not being paid. Okay, now if I write over here share forfeiture. So share forfeiture is going to be 100 share in 2. Now again, very important point. I cannot take that, okay, he has paid 5 plus 3 rupees, 8 rupees is being paid. No. Out of that 8 rupees, 2 rupees was belonging to security premium reserve. So out of that 8 rupee, I will have to take out rupees 2, and 6 rupees only can be multiplied over here. So 600 I am going to write, and calls in arrears, which is the first call amount. Calls in arrears is going to be rupees 100. How 100? 100 multiplied by 1 rupees for calls. First call he hasn't paid. So now my entry is telling, earlier entry was also telling, but this entry was wrong because you had not taken into consideration what is the amount of security premium reserve. Taking that into consideration, it comes to only 7 rupees per share because security premium reserve is already being paid by the shareholder. That is why it will not be debited. And the second rule is that in share forfeiture account, you never ever credit the amount of security premium reserve. So from there also 2 rupees has to be separated and only 6 rupees is going to come. And what is not being paid by him is the first call, which was of rupees 1. So this rule you always have to remember. Now this 600 can be transferred to capital reserve. The balance can be, utilized for the reissue of the share. And if entire number of shares are being reissued, whatever balance is there, that can be transferred to capital reserve. And for discount on issue of shares, this can be used. Okay, I hope this concept is clear to all of you. Now let me see if this thing is open. I'll take you to the questions, the number of questions which I wanted to do with you people. Along with each question, I will keep explaining you the concept. So this file will be available to you after the class. So right now, if you want to take screenshots, you can take just for your understanding. Later on, this file will be available to you. So let us see this. What is this question? Question number 1. You all can see this on the screen. The questions are available to you on the screen. Just put a thumbs up or say yes if you can see it on the screen. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Fine. Thank you. So let's see. First question. Vishnu Limited forfeited 20 shares. How many shares are being forfeited? 20 shares are being forfeited of rupees 10 each. So the question is referring to the face value over here. 10 rupees 8 each, or 10 rupees each, 8 rupees called up. Means right now only rupees 8 being called. Maybe the final call is not yet called, on which John had paid application and allotment money of rupees 5 per share. So if the share was rupees 8 per share, 8 being called, John has paid 5 rupees per share. This is paid. And how much he hasn't paid? 3 rupees is not being paid. So I can say this is my share forfeiture, and this is my calls in arrears. Okay, so if you make this kind of diagram somewhere in the rough, the things will be very clear. Or you just write down over there only on on top of these amounts so that it becomes very clear. Now, what happened? His shares are being forfeited. Okay, his shares are being forfeited. So my mind map, how it should go, I should be passing the entry in my mind that what will be the entry for forfeiting the shares. So share capital account going to be debited, share forfeiture credit, and calls in arrears credit. So this multiplied by number of shares, he had 20 shares, this amount is going to be credited, this amount is also going to be credited. What is going to come in the debit? Debit, it is going to come 20 multiplied by 8, which is share capital. You don't have to pass the entire entry. Just write the figure somewhere because you will not have that much of time to spend only for 2 marks. So you just have to write somewhere, think in your mind what is the entry and write. Okay. So this is the entry. I have passed my first entry. Now I'm proceeding further with the reading of question. What question is saying further? 15 shares were reissued to Parker as fully paid up rupees 6 per share.
Now again a very important point over here, जब भी आपको क्वेश्चन बोलता है कि शेयर्स आर बीइंग रीइश्यूड, हमेशा ध्यान दो कि कैसे रीइश्यू किया है, आर द शेयर्स इश्यूड एज फुल्ली पेड अप या कोई और अमाउंट बोला है। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा है पार्कर को इश्यू किया एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर। तो ध्यान देना ये ₹6 कहाँ जाएगा, दिस विल गो टू बैंक अकाउंट। आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, यू नीड नॉट टू अगेन पास एंट्री लाइक दिस, just to make you people understand I'm passing the entry. Otherwise when you are solving the MCQs just write the figures, ठीक है, you don't have to write this English part, only number लिखना है वहां पे। So बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 6 multiplied by 15। फिर आपको क्रेडिट कितने से करना है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दे आर सेइंग फुल्ली पेड, एज फुल्ली पेड। सो एज फुल्ली पेड मतलब you are going to multiply 15 with 10. So what is happening to the remaining ₹4? Remaining ₹4 is a clearly visible thing, is discount given to him. So 4 multiplied by 15. Okay, from where is it going to come? Obviously from share forfeiture. But you know what is the magic in this question? They have tricked you. What they have asked, now if I read the question further, we have done all this work, but they have asked a very different thing over here. Let us read. What is the balance in the share forfeiture account after the relevant amount has been transferred to capital reserve? अभी तक हमारा जो माइंड वर्क कर रहा था, यहाँ जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं हम एक ही चीज एक स्टूडेंट के दिमाग में आती है, हाँ कैपिटल रिजर्व ही पूछ रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ने ना यहाँ पर कुछ और ही पूछ लिया। क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया कि ये बताना कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद शेयर फॉरफीचर में बैलेंस कितना बचे। अच्छा, आप सबको ये बात मालूम है कि ओनली प्रोपोर्शनेट अमाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। क्यों? क्योंकि पार्कर के पास हमने कितने शेयर्स रीइश्यू किए, हमने जॉन से 20 लिए थे, फॉरफीट कितने किए थे, जॉन से 20 शेयर्स फॉरफीट किए थे, और क्या पार्कर को पूरे 20 के 20 शेयर्स रीइश्यू कर दिए? आंसर इज नो, पार्कर को थोड़ी ना 20 शेयर्स रीइश्यू किए, पार्कर को ओनली 15 शेयर्स रीइश्यू किए। इसका मतलब 5 shares are still remaining to be reissued in future. So in future, whenever we will reissue these 5 shares, we will utilize the balancing figure of share forfeiture account. अब share फीचर अकाउंट का बैलेंस आपको कहां से मिलेगा? या तो आपको लेजर बनाने में बहुत अच्छे से एक्सपर्टीज है तो आप लेजर बना के देख लेना, अदरवाइज आप जैसे मैंने एंट्रीज करी ऐसे एंट्री कर सकते हो। अब आप ये देखो यहाँ पर कितना अमाउंट आया था शेयर फॉरफीचर में, 20 into 5 100 आया था, और यहाँ पर कितना अमाउंट आया 60। अगेन मिस्टेक मत कर देना कि 100 में से 60 माइनस करके बोल देना कि अभी ₹40 बचा हुआ है, नहीं, दिस ₹60 इज फॉर 15 शेयर एंड दिस ₹100 इज फॉर 20 शेयर। यूनिटरी मेथड लगाओ जो आप हमेशा करते हो। तो अगर 20 शेयर के लिए ₹100 अवेलेबल था, ₹100 अवेलेबल था, तो 15 शेयर्स के लिए हाउ मच वाज अवेलेबल? तो 100 multiplied by 15 divided by 20, how much was available? 75. Still answer has not come. हाँ, आंसर के लिए थोड़ा घुमा फिरा करके मेहनत करनी है। इस 75 में से कितना यूज कर लिया वो देखने की जरूरत ही नहीं है। Why? Because question is not asking you capital reserve. Question is asking balance कितना बचा है बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व में चला गया होगा, बाकी का बचा हुआ ₹15। बैलेंस कितना बचा है? अगर 75 15 शेयर के लिए था तो 5 शेयर के लिए कितना बचा हुआ है? 25। एंड दिस इज योर आंसर। था ना, 2 नंबर के लिए बहुत मेहनत, मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्रिस्टल क्लियर है तो ही आंसर आ पाएगा आपको, अदरवाइज ये बहुत मिस्टेक प्रोन एरिया है। देखो 100 भी दिया हुआ है, कोई बच्चा यहाँ पे 100 पे भी टिक कर सकता है। अगर मैं ये क्वेश्चन बना रही होती, ये क्वेश्चन शायद सीबीएसई सैंपल पेपर स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पर ना ये 60 का अमाउंट भी डाल देती और यहाँ पर मैं 15 का अमाउंट भी डाल देती, जस्ट टू कंफ्यूज, सो दैट यहाँ पर मिस्टेक करे बच जाए। क्वेश्चन चाहता ही है कि आप मिस्टेक करें। यू have to be very careful in reading the question. Okay, so what we have to do again, see हमने क्या किया, हमने मेंटली एंट्रीज पास करी, ओनली नंबर्स लिखा और फिर देखा कि उसका आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या था, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत अलग थी। इस क्वेश्चन ने ये पूछा था शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस सीडी क्या है वो बता दो। तो बैलेंस सीडी क्या, 100 में से 15 शेयर्स आर बीइंग रीइश्यूड, सो 15 शेयर्स के लिए ₹75 इज ऑलरेडी यूटिलाइज्ड for reissuing the share. We have utilized ₹60.
balance 15 rupees would have been transferred to capital reserve. Only 25 rupees balance is left for remaining 5 shares which are not yet reissued. I hope this is clear to all of you. Okay. So you can mark the answer. When I give you the sheet, you will get the answers also over there. Not solved. The final answer you will get over there. Okay, now let us move to the next question. What is the next question saying? If anybody has a doubt, please keep noting your doubt. At the end of the class, I will take your doubts, because if I take in between, it will consume so much of time, which I don't want to do. Let us see the next question. What is next question saying? It is saying Mohit had been allotted 600 shares by Govinda Limited on pro rata basis, which had issued 2 shares for every 3 shares applied. Okay. So first of all, we should make the ratio. What ratio? 3 applied and 2 allotted. And I'll make another ratio also. This is applied versus allotted. And I'll make another ratio also, which is allotted versus applied. Allotted 2 and applied 3. Okay, whichever is going to be used, I will use that. They are saying allotted. So Mohit is being allotted 600 shares. So I'll have to use this one. Okay, so he is being allotted 600 shares, means obviously he must have applied for more number of shares. So if I do 600 into 3 by 2, so he was allotted 900 shares. Okay, he had applied 900 shares. ये निकाल के रख लेना है. आगे की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. मतलब आप पहले क्वेश्चन पढ़े, इससे पहले जो अभी तक का काम है वो कंप्लीट कर लो. And it should be in few seconds only. मतलब इसके लिए आप 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, उससे भी कम में कर देंगे. मतलब ये 30-40 सेकेंड्स तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. 30-40 सेकेंड सुनने में बहुत कम लगता है, बट एक्चुअली व्हेन यू डू यू सी कि 30-40 सेकेंड काफी होते हैं, कम नहीं होते. ठीक है, चलो. प्रो रेटा बेसिस विच 2 शेयर्स होते. ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया. had paid application of ₹3. Okay, इस गोविंद ने मोहित ने कितना पे कर दिया? ₹3 he has paid and could not pay allotment. मतलब ये call scenarios की बात कर रहे हैं. ₹5 per share. First and final call of ₹2 was not yet made by the company. His shares were forfeited. And the following entry will be passed. ठीक है, ये entry तो हमको वैसे भी आती है. थैंक यू, उन्होंने बता दिया, नहीं तो हम खुद भी पास कर सकते थे. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. अब देखो कॉल्ड अप मनी कितनी है. यहाँ पर हमेशा कौन सा अमाउंट आता है? कॉल्ड अप मनी आती है. कॉल्ड अप मनी कितनी है? ₹5, ₹3 और अभी ये तो बुलाया ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो. 5 + 3 कितना हो जाएगा? ₹8. 8 मल्टीप्लाइड कितना करूंगी? 8 मल्टीप्लाइड बाय करूंगी 600, तो ये कितना आ गया? 48. यहाँ पर आएगा 4800 रुपीज. ठीक है. शेयर फॉरफिटेड. अब बहुत ध्यान देना, शेयर फॉरफिटेड में क्या आएगा? शेयर फॉरफिटेड में क्या इसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? नो नो नो, ये तो प्रो रेटा अलॉटमेंट है. इसने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई नहीं किया था. ही हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. ओके, सो 900 मल्टीप्लाइड बाय 3, हाउ मच ही हैड पेड? ही हैड पेड फॉर 900 शेयर, मतलब 2700 रुपीज दिए थे इस मोहित ने. एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी पे नहीं की ना. क्या अलॉटमेंट मनी में पूरा अमाउंट चला जाएगा? नहीं. क्यों? जहां पर ये एक्सेस था, ठीक है, इसको एक्चुअली कितना पे करना चाहिए था? ही शुड हैव गिवन अस 600 into 3, 1800, और उसने हमें क्या दे दिया? उसने हमें 2700 दे दिया था. तो ये जो एक्सेस मनी है ना, एक्सेस मनी कितनी है? 27 minus 1800, 900 की एक्सेस मनी है. ये 900 इधर एडजस्ट करना पड़ेगा. तो 600 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट पे ड्यू कितना है? ₹5 ड्यू है अलॉटमेंट पे. अलॉटमेंट पर मनी ड्यू हो रही है आपकी 3000. क्या मैं 3000 पूरा लिख दूं? नहीं, आई शुड नॉट बी राइटिंग 3000 रुपीज ओवर हियर. 3000 में से ये 900 में माइनस करूंगी. बाय, बिकॉज याद करो, आप जो भी एक्सेस होता है एप्लीकेशन पे उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हो, तो वो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं. तो यहाँ आना चाहिए 2100. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं. इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल में दैट अमाउंट शुड कम विच इज बीइंग कॉल्ड अप. हाउ मच इज बीइंग कॉल्ड अप? ₹8 आर बीइंग कॉल्ड अप. सो 8 multiplied by 6 is going to come over here. 600 shares into ₹8 per share is going to come over here. Now share forfeiture
share forfeiture you will have to multiply with 900 rupees. Why 900, ma'am? Because this is pro rata allotment. That is why 900 shares will be taken into consideration while passing the entry for share forfeiture. So 900 multiplied by 3, and this calculation is over here. Why? Because this is pro rata allotment, so he had some excess money. How much excess money, ma'am? He had paid us 2700 on application, whereas he should have paid us only 1800. 900 excess money was there. What are we going to do with this 900 excess money? We are going to adjust it towards the allotment. So allotment was due 3000 rupees. Out of that, he has already paid 900 rupees. So what is not being paid? This 2100 is not being paid. But when you look at the answers now, you will be very happy. Why? Because आपको ना इतनी मेहनत करनी ही नहीं थी, क्योंकि जैसे ही तुमने 4800 का अमाउंट निकाला ना, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल था, ये। तो जो भी स्मार्ट बच्चा रहेगा वो क्या करेगा? इधर ही रुक जाएगा, आगे मेहनत करेगा ही नहीं। जब 4800 के साथ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, तो क्यों आगे का ये सब करना? इफ यू आर दैट मच लकी कि उन्होंने 48 के साथ कोई दूसरे ऑप्शन बनाए ही नहीं, आपके लिए काम आसान कर दिया, तो आप क्यों मेहनत करोगे? आप इधर ही जाओ और टिक करो, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट आंसर अगर आपका ठीक आ गया, या तो आपको लग रहा है कि मैं पूरी एंट्री पास कर लेती हूँ, मेरे को जल्दी जल्दी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो पूरी एंट्री पास। अदरवाइज जैसे 48 का आंसर आ गया एंड यू आर 100% श्योर कि मेरे यहाँ पे तो कोई गड़बड़ी होने का चांस नहीं, देन आगे कुछ करो ही मत, यहीं पे आंसर पर टिक करके आओ, क्योंकि 48 के साथ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। सो यू हैव टू वर्क स्मार्टली ओवर हियर, टिक इट ऑन 48 ओनली एंड मूव अहेड, ठीक है? उसके बाद इसमें ज्यादा मेहनत करो ही मत, बाद में टाइम बचता है तो भले ही करके देख लो, अदरवाइज यहाँ पर जो आप टाइम सेव कर रहे हैं, यू मस्ट यूटिलाइज दैट टाइम समवेयर एल्स इनटू सम अदर क्वेश्चन। ओके, चलो, लेट अस मूव अहेड नाउ, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is next question saying? Next question is saying X Limited forfeited 10 shares of rupees 10 each, rupees 7 called up. Okay, it is also called up amount is how much? 7 rupees is being called up. The shareholder had paid application. How many shares are being forfeited? 8 shares are being forfeited, and the shareholder has paid up how much of amount? How shareholder has paid the amount of rupees 7 per share. Okay, just a minute. What has happened to this? Yeah. So X Limited forfeited 10 shares. How many shares are being forfeited? 10 shares of rupees 10 each, 7 called up. Means share capital is going to be debited with 7 multiplied by 10, 70 rupees. Which shareholder had paid application and allotment money of rupees 5 per share. So means share forfeiture, how much is going to come? 10 multiplied by 5. Okay, 50 rupees is going to come over here. 8 shares were, okay, so call scenario is how much? Obviously, call scenario is going to be 2 rupees per share. Okay, this is my first entry. Out of these, 8 shares were reissued to buy as rupees 8 per share, rupees 8 per share, rupees 8 paid up per share. 8 paid up per share means मेरी second entry क्या होगी? Bank account debit. 8 shares we have reissued. 8 into 8, 64. And 2 share capital. Share capital is also 64. Why? It is not saying fully paid up. Fully paid up बोलता तो हम क्या करते? 8 multiplied by 10. यहाँ पर कितना आएगा? इधर भी 8 multiplied by 8 ही आएगा. मतलब 8 rupees receive हुआ और 8 rupees paid up पे आपने issue कर दिया. तो 64 and 64. There was no need of using share forfeiture account.
ठीक है, हमने मतलब कोई डिस्काउंट पे इसको रीइश्यू नहीं किया है, जितने का शेयर था उतने पर इसको रीइश्यू कर दिया। विद व्हाट अमाउंट कैपिटल रिजर्व अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड व्हाट विल बी द बैलेंस इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब यहाँ पे जो जल्दीबाजी करेगा उसकी क्या मिस्टेक होगी, वो सोचेगा अच्छा 64 का 64 में रीइश्यू कर दिया, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना अमाउंट अवेलेबल था, 50 रुपीज अवेलेबल था, चलो पूरा का पूरा 50 ट्रांसफर कर दो। बट रुको, क्या पूरे शेयर्स आपने रीइश्यू किए थे? पूरे शेयर्स रीइश्यू नहीं किए थे, ओनली 8 शेयर्स वर बीइंग रीइश्यूड। तो कैसे 50 रुपीज ट्रांसफर होगा? 50 रुपीज कैन नॉट बी ट्रांसफर, आपको प्रोपोर्शनेट अमाउंट लगाना पड़ेगा यूनिटरी मेथड का एप्लीकेशन करके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 10 रुपीज के लिए 10 शेयर्स के लिए हाउ मच अमाउंट वाज अवेलेबल, 50 रुपीज वाज अवेलेबल। ये कितना शेयर है? 10 शेयर्स के लिए। तो 8 के लिए कितना अवेलेबल, 50 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 10, ये करके आप निकालोगे, ठीक है। सो इट इज कमिंग टू 40 रुपीज, ठीक है। 40 रुपीज इधर बचा, ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। एंड बाकी का 10 रुपीज क्या है? 2 शेयर्स के लिए, वो बैलेंस। जब भी फ्यूचर में दीज 2 शेयर्स विल बी रीइश्यूड एट दैट टाइम, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस अमाउंट। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, दिस शुड बी योर आंसर। देखो यहाँ पे 50 एंड 0 भी लिखा है, तो जो बच्चा जल्दी जल्दी में करेगा, दैट चाइल्ड कैन गो फॉर दिस and this will be the wrong answer. 40 and 10 is your answer. 40 rupees you are transferring to capital reserve because यहाँ इस 8 shares के लिए आपके पास 40 rupees available था, लेकिन लकीली हमको वो 8 rupees पर ही रीइश्यू करने के लिए मिल गया, तो हमने डिस्काउंट दिया ही नहीं, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, पूरा का पूरा 40 rupees हमारा प्रॉफिट बन गया। एंड दैट इज वाई वी हैव ट्रांसफर्ड इट टू शेयर कैपिटल रिजर्व, सॉरी, ठीक है। और बाकी का 10 रुपए, बाकी के 10 रुपए को राइट नाउ वी कैन नॉट टच। व्हाई वी कैन नॉट टच? बिकॉज व्हेनेवर इन फ्यूचर वी विल इश्यू द रिमेनिंग 2 शेयर्स, वी विल हैव टू यूटिलाइज दैट 10 rupees. If we utilize, fine. If we don't utilize, means the 100% utilization is not there, so whatever balance will be there, it will be transferred to capital reserve in future, not right now, because right now we are issuing only 8 shares, so amount in respect of 8 share can only be transferred to capital reserve. Okay, is this clear? I hope everything is clear till now, and keep noting your doubts. I will take it once I finish the class. I will take it. Okay, now moving to the next question. What is next question? Let us see. APAR Limited, question number 4. APAR Limited forfeited 4,000 shares of rupees 20 each. Fully called up. Fully called up means all 20 rupees is being called up. Okay. On which only application money of rupees 6 per share has been paid. Only 6 rupees is being paid and remaining 14 rupees is not being paid. Okay. Out of these 2,000 shares were reissued and rupees 8,000 has been transferred to capital reserve. Calculate the rate at which the shares were reissued. Okay. Again, ये थोड़ा कुछ पहले के क्वेश्चन के जैसा है, इसमें भी ये आई थिंक ये आईएससी क्वेश्चन पेपर, आईएससी स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चन का जैसा क्वेश्चन मैंने बनाया, या मे बी इट इज द सेम क्वेश्चन ओनली। ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पर भी आपसे जो ट्रेडिशनली पूछते कि जरा बताना कैपिटल रिजर्व का अकाउंट कितना है बता दो, वो नहीं पूछा है। क्या पूछा है? कैपिटल रिजर्व तो खुद ही क्वेश्चन बोल रहा है कि ये देखो इतना अमाउंट ना हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, तो जरा ये बता दो कि किस रेट पर ये शेयर्स इश्यू किए थे। अगेन आप देखोगे कि इसकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए। आप चाहे तो आप सिर्फ फिगर्स लिखेंगे, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है कि आप पूरी एंट्री पास करके देखो। मैं यहाँ पर पूरी एंट्री पास करके बताऊंगी क्योंकि आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू पीपल। ओके, तो इन्होंने कितने शेयर्स फॉरफिट किए? शेयर फॉरफिटेड की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, एसपीआर होता है तो वो भी डेबिट होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, शेयर कैपिटल डेबिटेड विद द कॉल्ड अप मनी। क्या पूरा का पूरा कॉल्ड अप था? यस, पूरा अमाउंट वाज कॉल्ड अप। 4,000 के शेयर्स थे एंड 20 रुपीज का एक शेयर था। 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, फुल अमाउंट वाज कॉल्ड अप। ओके, सो 80,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। इसने क्या दे दिया था? दिस शेयर, दिस एप्लीकेंट हैज पेड, दिस इन्वेस्टर हैड पेड अस
6 rupees per share. So 4,000 multiplied by 6, इसने हमें 6 rupees per share दे दिया था, 24,000 उसने दे दिया था, और कॉल सिनेरियोस में कितना जाएगा जो उसने पे नहीं किया, तो कॉल सिनेरियोस में ऑब्वियसली आपका अमाउंट जो जाने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 14 रुपीज पर शेयर इसने पे नहीं किया, तो 56,000 इसने पे नहीं किया। ठीक है, इसके बाद ये वाली एंट्री पे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट में एक्चुअली पूछ रहा है कि कितना अमाउंट, ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर ना शेयर फॉरफीचर भी रहा होगा, कुछ शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी डेबिट हुआ होगा, वो भी हमको पता नहीं है, ये सब हमें पता नहीं, लेकिन इसके बाद वाली एंट्री हमको पता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कितने शेयर्स रीइश्यू है, आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर्स रीइश्यूड, ठीक है, आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर्स बीइंग रीइश्यूड एंड 8,000 इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। अब 2,000 मल्टीप्लाइड बाय कुछ एक्स अमाउंट रहा होगा, फुल्ली पेड इश्यू किया होगा तो मल्टीप्लाइड बाय 20 रहा होगा, या वट, इस एंट्री में जाते नहीं अभी, इसके बाद वाली एंट्री ना क्वेश्चन ने खुद बताई है, इसने क्या बोला, 8,000 रुपीज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो जो लास्ट एंट्री होती है ना, लास्ट एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, सॉरी शेयर फॉरफीचर, नॉट शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होता है 8,000 रुपीज टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाता है, जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। ये बोल रहा है कि ये कैपिटल रिजर्व मतलब प्रॉफिट हो गया इतना इन शेयर्स के फॉरफीचर रीइश्यू पे। अब मुझे बताओ ये कितने शेयर्स थे, दीज वर 4,000 शेयर, ठीक है, इन 4,000 शेयर्स के लिए कितना अमाउंट अवेलेबल था, 24,000 अवेलेबल था। ठीक है, इसका हाफ 50% अगर मैं कर दूं, क्योंकि यहाँ पे 2,000 शेयर्स रीइश्यू किए तो मुझे यूनिट मेथड लगाने की जगह मैं जल्दी से इसका 50% कर देती हूँ, तो 24 का 50% इस 12,000 अवेलेबल था, और उसमें से आपने कितना बचा लिया, 8,000 बचा लिया, मतलब कि यहाँ पर जो अमाउंट यूटिलाइज हुआ होगा वो कितना हुआ होगा, 4,000 का अमाउंट यहाँ पर यूटिलाइज हुआ होगा। ठीक है, 4,000 का अमाउंट यहाँ पर यूटिलाइज हुआ, और तुमने क्या किया, बाकी का बचा हुआ 8,000 रुपीज कहां पर ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। एक बार फिर से समझो मेरी बात, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमने ना ये जो 2,000 शेयर्स इश्यू किए, उस 2,000 शेयर्स के इश्यू पर हमें 8,000 का फायदा हुआ। मैम अब फायदा हुआ क्यों बोल रही है, कैपिटल रिजर्व, अरे कैपिटल रिजर्व वही होता है, कैपिटल रिजर्व इज अ गेन ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर, तो हमको गेन हो गई रीइश्यू पे, कितने की गेन हो गई, 8,000 की गेन हो गई। 8,000 की गेन कैसे हुई होगी, ये देखो 24 अवेलेबल था, बट क्या ये 24 2,000 शेयर्स के लिए था, नहीं, 24 था 4,000 शेयर्स के लिए। तो यहां से मैंने यूनिट मेथड लगा करके ये निकाल लिया कि अगर 2,000 शेयर्स के लिए मुझे निकालना पड़े तो कितना है, तो 2,000 के लिए 50% ऑफ इट, हाफ ऑफ इट, तो मेरे पास 12,000 अवेलेबल था फॉर डिस्काउंट ऑन दिस रीइश्यू ऑफ दिस 2,000 शेयर, उसमें से मैंने 4,000 यूटिलाइज किया होगा, है ना, तभी मेरे पास 8,000 बचा, और मैंने इस 8,000 को क्या कर दिया, इस 8,000 को मैंने ट्रांसफर कर दिया, कहां पर, कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में आई हैव ट्रांसफर्ड दिस अमाउंट, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में मैंने 8,000 ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर मेरा यूटिलाइजेशन कितना रहा होगा, 4,000 का मेरा यूटिलाइजेशन रहा होगा। ठीक है, तो ये 4,000 रुपीज मैंने इधर यूटिलाइज किया। क्या बोल रहे, कैलकुलेट द रेट एट विच दीज शेयर्स आर बीइंग रीइश्यूड, तो अगर मैंने यहाँ पर 4,000 रुपीज यूटिलाइज किया, और शेयर कितने का था, अब मेरे को यही अज्यूम करना पड़ेगा कि शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, तो अगर 20 में से 20 में से मैंने 4 का डिस्काउंट दे दिया, यहाँ पर मैंने ये जो 4,000 है डिवाइड बाय, मैं अगर 4,000 को डिवाइड बाय 2,000 करूंगी तो कितना, मैंने 2 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, 2 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने शेयर्स रीइश्यू किया होगा 18 रुपीज पर शेयर, दिस शुड बी द आंसर, 18 रुपीज पर शेयर पे मैंने शेयर्स को रीइश्यू किया होगा। एक मिनट में जरा इसका आंसर देख लूं, out of which 2,000 shares were reissued at rupees 8,000 were reissued and rupees 8,000 were transferred to capital reserve, 4,000 rupees मैंने यहाँ पर दिया होगा, and yeah, 18 should be the answer for this. Let us check the answer. मैं इन सबको जरा इरेज कर दूं।